Hey, so hello everyone. This is CA Aakash Kandoi, and I hope every one of you is doing really very good. First of all, a very good evening. And as you can see, we have today with us the rock star, the ultimate of CA Final, the AIR 2, Sakshi. Yes, and we also have Akshansh Garg sir. So first of all, many congratulations to Sakshi on securing AIR2. मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन साक्षी जो हर किसी ने पूछा होगा, हर कोई पूछेंगे भी, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा साक्षी, हाउ डज इट फील? हाउ डज इट फील? The first instance, you wouldn't believe it. You will need to recheck it at least 2 to 3 times to confirm that, okay, you are actually seeing it. राइट. And then it's burst of emotions. You'll feel excited, you'll feel relieved after so many months of preparation, and the last 2 3 days after the notification dates, anxiety, all those emotions will burst at once. माय So गॉड. it's an overwhelming feeling, and then you see your family's faces, so that's a cherry on the cake. A kind of emotional moment for the family as well. Yeah. It is. uh, Yes. their dreams are much more deeply attached to it than mine. Absolutely, and even it's like they themselves become a chartered accountant. It feels in that particular way, and also we see that some efforts we are not able to see, we are not able to feel, but they have put in so much of efforts that they only know. We can't see it. Yeah. Right, absolutely. So first of all, congratulations to you and also to your mom and dad and your whole family. So first, my question, Sakshi, to you is: did you secure a rank in inter as well? Because foundation में तो rank नहीं होते थे, तो inter में भी आपके rank थे क्या, साक्षी? Actually, I was All India rank first in CA Intermediate that was That's held in May 2018. that's great. That's great. So in May 18, you cleared your CA inter, and at that time also you were AR 1, and now Yeah. AR 2. That's great. That's superb. Akshan sir, आपको कुछ सवाल साक्षी से पूछना हो तो? Hello, Sakshi. It's a privilege for us that we are taking your interview, and many congratulations. आपका AIR2 आया. पहली बात तो मुझे बताओ आज सुबह से कितने कॉल्स आए? I couldn't keep account. मतलब सुबह से चल रहा होगा ये? सुबह से इतने सारे कंटिन्यूस कॉल? Absolutely. अच्छा, रिलेटिव्स के भी कॉल आए कि नहीं आए? Many relatives. I mean, they are the first person who will be happy hearing on that. अच्छा, मतलब वो एक फीलिंग ही बहुत अमेजिंग होती है. मतलब आकाश सर, अपन तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि Absolutely. हमारा ऑल इंडिया रैंक 2 आया है. और आईसीआईसी कॉल कितने बजे आया था? Actually, it was just on the minute. Like it was 1 minute ago, I could say. Oh, I just ended the call and I got to check my results, so it was close. did you at any moment feel that is someone doing any kind of prank with me? Because some rankers feel that way. We all feel that way because when you receive that call, you simply cannot believe that this is happening. Right. No matter how good you have prepared, how confident you were, even 2 3 days before the notification or result announcement, but as the time comes nearer, you'll feel anxiety that, okay, just let me pass this exam and whatever else is okay. So when you Absolutely. get that call, it's you cannot decide on that moment whether you should accept it or there is a prankster or someone just playing around. राइट. दैट्स ग्रेट साक्षी. क्या आपने साक्षी वैसे एक्सपेक्ट किया था क्या कि रैंक आपको आएगा AR1, AR2, AR3? वर यू एक्सपेक्टिंग अ रैंक? To be honest, because I secured one in intermediate, I was expecting at least somewhere in the top 50, but not particularly the AIR2. But I was expecting कि somewhere in the top 50 I might be there. ओह, दैट्स ग्रेट साक्षी. अक्षांश सर, आपका कुछ क्वेश्चन हो तो साक्षी से. साक्षी, यार पढ़ते तो सब हैं, सब अपनी जी तोड़ मेहनत लगाते हैं, जान लगाते हैं, तो सीए वाले बच्चे वैसे भी अक्षांश बहुत सर, हार्ड शायद वर्किंग. आपका माइक फ्लक्चुएट हो रहा है. एक बार आपने माइक पेन रखा है क्या? एक बार देख लीजिए बस. नहीं सर, मैंने माइक नहीं लगा रखा. मैं ठीक है सर. माइक, आ रहा है सर आवाज़ अभी आपका प्रॉपर. ठीक है. वॉइस प्रॉपर है ना? मैं थोड़ा हाँ तेज हाँ, बोल लेता हूँ, है ना? प्रॉपर है, चलेगा सर. तो साक्षी, पढ़ते सब हैं, सब बच्चे मेहनत करते हैं. ऐसी क्या अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि किसी का AIR1 सीए इंटर में और सीए फाइनल में AIR2? मतलब ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जो बहुत हिडन स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी कारण से
कंसिस्टेंटली रैंक आ सकती है। मतलब पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, आप देखोगे 10-10 12-12 घंटे बच्चे लगे रहते हैं एंड दे आर जस्ट इवन स्ट्रगलिंग टू पास, एंड आप रैंक ला पा रहे हो। तो मतलब कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो स्पेशली हमारे लर्नर्स को आप दे पाए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। So basically, what I believe is whenever you study, your first focus should be on getting the concepts, getting to know what are you being taught and how it is being applied. If you have the conceptual clarity and you are being consistent in, like I have seen many students around there that who will leave some topics because they aren't important for exams and they haven't been asked in past exams and those things, so they'll simply ignore it or give it less time. So what happens is there are interconnectedness between various topics. So you won't get complete understanding of a very important topic as well because you left some topic. Right. So that's the way you should organize. You should at least complete conceptually all the topics. Maybe not, you would not devote much more time to the less important topics, but conceptually you should be aware of all the topics and you should be consistent in your schedule. It's not like you have given 12, 13 hours in a day and the next day you are on a break. सो कंसिस्टेंसी इज एज इम्पॉर्टेंट, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना जितना पढ़ाई करना है। तो साक्षी, जैसे आपने एक कहा एक वर्ड कि यू आर नॉट लिविंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक्स इवन इफ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, तो व्हाट इज योर गाइडेंस टू दी स्टूडेंट्स? क्या उनको वो टॉपिक छोड़ना चाहिए, कवर करना चाहिए इवन इफ इट इज नॉट कमिंग इन एग्जाम्स? My advice would be to get it the conceptual clarity what the topic is about. If I would say it is a text provision or something, that understand why is it there and what are its implication for anything. Okay. Even if your concepts are clear, then suppose in any scenario it is asked in exam, you will be able to recollect at least some portion of it and you will be able to write something. And if that provision has some connectivity to some other provision, then you will be able to link them better and you will be able to write a good answer, a comprehensive answer. करेक्ट। सो साक्षी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या था? मतलब आप अगर एक ब्रीफ दे सको रिगार्डिंग एफआर इन लेट्स से एसएफएम, ऑडिट, लॉ, एससीएमपी, electives, DT, IDT, and also focusing little more on audit and SCMP, because जैसे हमने ये रिजल्ट देखा ऑडिट और SCMP में काफ़ी लोगों के बहुत खराब मार्क्स आए हैं। तो कैन यू शेयर योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी in a short manner and specially focusing on audit and SCMP so that it will be helpful for students as well? Okay. So for FR, the basic thing is you should first get the, I would say, the soul of indices, because indices have very different concepts than what used to study in the ASs. So you should first get this soul, why they are like this. And once you get that conceptual clarity, you will get most of the indices because they run around the same topic, that there should be fair presentation. Everything that is in your business, in your whatever you are doing, it should be reflected in your financial statements to the maximum extent possible. Absolutely. So once you get that conceptual clarity, it would be easier for you to go through every index and understand the intricacies that are involved in each one. And once you have the conceptual clarity, you know what should happen, what shouldn't happen. You should try to do sums reflecting each and every topic, even if there are mini sums that I used to do. If I am doing a PP sum, then I would say कि इस topic पे ये question ये करना है, ये topic पे ये question ये करना है. So that helps you remember the concepts. And once you do that, you could have some comprehensive questions that are cover the entire index, for example, and that those sums will help you revise again and again, and you'll be able to say summarize the entire index. And for FR, it also depends on practice, because as far as I know, FR paper is sometimes a bit lengthy as well. Right. So the writing practice, how well you present your working notes and all those things matter. So your writing practice, how much sums you solved in what time you solved, all those matter in FR. And Sakshi, questions कहाँ से practice करने चाहिए? ICI module is sufficient or any other source to be referred? To be honest, the ICI released a new module for May 21 attempt, and in which they did a very good thing. They combined all the previous RTP, previous exam questions, the unique questions that were there into that module. So that was a good thing. You could get all the ICI material questions in that single module. That helps. And for that mini questions that I said, you could have those questions on even Google as well. You could find them on YouTube as well. Even some videos, if someone is explaining any concept, he will try to explain it by numbers only. FR can't be
explained theoretically. Theoretically, So he will absolutely. give you Some he will numbers. give you some numbers. So you could just scribble them down and you could recall कि ये concept था. एब्सोल्युटली, तो एफ आर इज डन दैट, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी और उसके बाद क्वेश्चंस आप हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए. देन व्हाट अबाउट Correct. एसएफएम? एसएफएम में हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? SFM, I would say the conceptual clarity that is required in SFM is at much a higher level than it is required in any other subject. राइट. Because SFM is an all integrated subject. You cannot study a single topic in SFM without if you are ignoring any other topic, because all are interconnected. You are, even if you are calculating PV, then you will need to refer to valuations as well. राइट. So all those chapters are interconnected. So for SFM, you need to first have an overall view that okay, this chapter has this much topics and this connects with this, that one as this in this manner. And then I mean, you can plan holistically that whenever I'll say pick derivatives, then I'll do forex with it, and I'll do that with it accordingly the topics, and then you can have a complete understanding of that particular point. So that gives you a complete idea of how the subjects work and how if say a bizarre situation is asked in exam or unusual question is there in exam, you'll be able to connect the dots that okay, that was this, I could do this from that, I could do this from that. You'll be able to solve it. राइट राइट राइट. बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरीज है, पूछ रहे हैं कि हम लोग घूमने जाते हैं, मूवीज देखते हैं, आप भी ऐसा करते थे क्या? क्योंकि आप बहुत अभी एक्सेप्शन हो ना सबके लिए. To be honest, I am a huge binge watcher. I couldn't miss a Netflix series or a Prime series or anything like that. So I do watch these, but I wouldn't say that I would devote 10-12 hours a day to watch a Netflix. I'll do my 8-7 whatever time I have committed for my studies, and then I'll do the binge watching as well. Is it, which show do you like? Which is your favorite show? There is a show on Prime called as Mentalist. Okay. It's basically a crime solving show sort of thing. That's great. I like, yeah. और साक्षी, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि सर हमारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें क्या रैंकर्स की लाइफ में भी होती हैं क्या? मतलब कि हम रैंकर्स भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या किसी चीज से, और कोई ऐसी चीज जो उनको मतलब अपने गोल से दूर कर सके, मतलब दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ था कि अगर ऐसा था तो फिर उससे कैसे ओवरकम करना है? बिकॉज ये आज की जनरेशन की मेजर प्रॉब्लम है कि इस एज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सब चीजें होते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों से कैसे ओवरकम किया आपने? Okay, so look, what happens if you know that you have to study for 2-3 months, and you can keep away all the distractions and decide that after 2-3 months I'll take up this, I'll take up that. But the CA final course or CA intermediate, whatever you say, it's a 9-month course for CA intermediate and for 3-year preparation for CA final. So you just can't keep away all the distractions for entire 3 years. And in those 3 years, it is the time that you actually get exposure to some work experience. You do the articleship, someone will do the industrial training, and you actually explore the real world. So there will be distractions, but what is needed is you prioritize your time. You need to go out as well, you need to party as well, you should go to movie as well, but you should devote the whatever time you have committed to yourself that I would study for 3 hours this day, I would, you would complete this topic on that day. You should do that first, and whatever time is left, you utilize in the manner you like. Basically, it's like rewarding yourself. If you are able to achieve your targets, you can reward yourself by doing whatever you like. आपको जो पसंद है आप वो करो, आप वो देखो. Yes, and it works opposite way as well. Suppose I have enjoyed too much today, then I could compromise on the enjoyment part tomorrow. Right. So that dedication level is needed. That means you, मतलब मैं बोल के उसको किसको पढ़ने नहीं बोल सकता. उसको पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा. We are पढ़ेगा. actually not children के मम्मी बोलेगी तो पढ़ने हाँ, बैठेंगे. बस वही बात है. लोगों को क्या लगता है कि मुझे कोई आके बोले मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा है. एक बात आप सब समझ लो, अगर आपको पढ़ना है, सीए आपको बनना है, तो आपके भी आप पे ना कोई दूसरा पढ़ सकता है, ना कोई दूसरा मेहनत कर सकता है. पढ़ाई आपको करनी, रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा. बेसिकली सर बात ऐसी है कि बात हम सबको पता है कि एक्चुअल में हमें क्या प्रोसेस फॉलो करके किस तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अचीव होना है. बट क्या होता है, हम लोग सर जान के भी अंधे होते हैं मतलब, और हम लोग इग्नोर करते हैं उन चीजों को. बट हमें ये चीज पता है कि भाई इतने आवर्स, मैं तो कह रहा हूँ सर, अगर हमें पता है कि मिनिमम हमें 12 आवर्स पढ़ाई करे बिना हम सीए नहीं बन सकते, तो अगर हम 10 आवर्स भी पढ़ रहे हैं ना,
तो वेस्ट है। मतलब अगर आप अपने गोल की तरफ सक्सेसफुली नहीं हो पा रहे, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वेस्ट है सर। राइट राइट राइट। साक्षी, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। आपने एसएफएम का शेयर किया, एफआर का शेयर किया, व्हाट अबाउट ऑडिट एंड लॉ? So now I would like to speak about audit. So audit, I would say, I would advise all of them to, for auditing standards particularly, to refer the auditing pronouncements, the bare essays that Bare institute text. provides. Yeah. So what happens when you refer to that? Now that is the complete picture of an essay. And if you'll refer to that, you'll find there are footnotes as well that are connecting one essay to another. Right. So once you go through it, you get a complete understanding of how, but not exactly, but you will get understanding of how a practical audit works. Because this SA 260 would be connected to say 280, and all those things will be interconnected, and you will see the entire process that okay, that start with planning in SA 200 and end at SA 700 with reporting and all. Right, And right, right. all that picture you will get if you are referring to the pronouncement. Because if you refer to any sort of summary, obviously it is summary. हाँ, So correct. you won't get the complete picture, no? Right. And for questions, मतलब questions के लिए ICI MAT is sufficient, वो काफी उतना? Questions के लिए I would say the institute material is sufficient, that has covered many things. And if you are clear about what have you read, say bank audits, so if you have read the entire text of this advances का procedures ये है, इसका वो procedure ये है, then in articleship or when you were reading the essays as well, you would have gotten basic understanding of how this should be verified. Correct. So you could write that answer, taking your points in something, remembering from the banking industry specific points. You could write that answer. Write that answer, correct. So And basically audit. auditing, yeah. So auditing, I would say, basically requires a writing practice. You should even give yourself some questions and try to write them. Like other subjects, I would say it could work like you were just scrolling down your pages and seeing this. ये लिखा है, okay. But audit, you need to sit and write down some questions. You need to recollect what was going through your mind, what you read there, what if you have auditing experience during your articleship, what you did at that time. So you need to write that down, put it on paper. Right. So audit requires the detailed studying. It also requires question referring, and also it requires writing practice. Yeah. Yes, absolutely. So, Sakshi, one more thing I would like to add. क्या जैसे अभी आपका भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था मेरे हिसाब से, इट वाज सपोज टू हैपन इन मई देन इन जुलाई, तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बोलता है हमारी पढ़ाई रुक गई, हमारा पढ़ने का मन नहीं किया। तो मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं, आपका भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता था क्या कि अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, चलो अभी एक महीना नहीं पढ़ेंगे? ऐसा आपके साथ भी हुआ था कभी, या आपने उसको यूटिलाइज किया कि चलो लेट्स एक और रिविजन कर लेंगे एक्स्ट्रा इसके अंदर? See, every one of us have been to school picnics, no? So I think we must remember that after at least a week or 4 5 days after the school picnic, no one is studying in school. Everyone is talking about what happened then, and there is chit chat going on. So what do you think, if you take an entire 1 month break, and will you be able to resume it? Right. So that should be in your mind. You should not just lose touch with the studies, because once you take this much amount of break, you will never be able to restart it from the same state. एंड ऑल्सो रिस्टार्ट करने में फिर वापस से इट विल कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ टाइम कि जो Yes, पहले में लगा था अपने को। राइट राइट। पहले नॉट ऐसा नहीं कि आपने आज स्टेज पे छोड़ा तो 3 महीने बाद या 1 महीने बाद आप दोबारा वहीं से उठा पाओगे। वो नहीं होएगा अपने साथ। करेक्ट। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज है कि आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से की थी या एक नॉर्मल फर्म से आर्टिकलशिप की थी? I worked with a medium-sized firm at Indore only. It is Anand Sakshi Airan company, but I took the industrial training at Hindustan Unilever Limited in my 3rd year of articleship. That's great. Training. साक्षी, आपको छुट्टी कितनी मिली थी इसके अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर? 3 months. 3 मंथ्स की छुट्टी में आपने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया, बिकॉज यू वर प्री प्लानिंग एवरीथिंग, पहले से आपने प्लान कर रखा था सब कुछ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So, साक्षी, ये आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई को मैनेज करना मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए, कि रात को 7 7 8 8 9 9 बज जाते हैं और उसके बाद भी पढ़ाई को मैनेज करना, तो ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हुआ? It is difficult, but you see, whenever we are in office, it isn't like we are there for say 7 8 hours, so you are working for 7 8 hours. You do time pass a lot.
talking to your colleagues and roaming here and there, taking a 1.5 lunch breaks. So you could save those little times and do some, say, revision of a single topic at that time also. So it Right. helps, and it is just a light revision. You won't see you have studied a lot, Got it. but your topic would be covered. Topic will be covered, right? Sakshi, what about law? How did you manage law? Like you managed audit? So law, I would also say law should, at first instance, you should try to the maximum extent possible to read the bare text. Okay. Whatever is written in the act, whatever the lawmakers written, you should read that first, because you will get what language actually they are using. Because in audit, the language really matters. In other subjects, you could write in your own words and all those things are fine, but in law, you need to write the exact legal language that the lawmaker has used. So Absolutely. if you, yeah, and what I personally think happens if you read first time a thing for in a usual casual language, you will remember those words and not the legal Not terminology the that legal was used. terminologies, right? So if your first reading itself is involves legal terminology, then whenever you will recollect your concepts, you will get those legal terminology in your mind, not the casual word that you read. राइट 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 मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर अपन ने पहले डिफिकल्ट पढ़ा तो उसको लिखेंगे तो एटलीस्ट उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, इजी पढ़ा तो उसको अपन और इजी बना के देन वी विल राइट इन अ मच सिंपलर लैंग्वेज, देन वो मार्क्स कैसे देगा अपने को? No, it happens with us now. Like we are Indians, or I mean North Indian, Central Indian people. We listen to Hindi from the time we are born, so एब्सोल्युटली. we are able to recollect anything in Hindi. तो सिमिलरली अगर आपका फर्स्ट इंटरेक्शन सब्जेक्ट के साथ लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं होता है, तो यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो दिस वाज फॉर लॉ एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इसके अंदर भी आईसीआई मटेरियल से ही आपने की थी? ICI material, and you can, I mean, law has various case laws. You could just simply browse through and see, okay, इस topic पे I'm finding, say, directors वाला topic or FEMA is very interesting. I could just browse, so say, tell me the latest case studies that involve FEMA or something. It would make the subject interesting as well, and you will get to know how that law is actually applied in a particular situation. And if you're studying at the CA final level, you should have that knowledge, even if that deep knowledge isn't tested in exam, but you should have that knowledge. करेक्ट करेक्ट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. यस. साक्षी, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि अल्टीमेट जो रोल होता है वो हमारे लास्ट 3 घंटे का होता है, तो वो 3 घंटे में कई बार पेपर आप देखोगे, जैसे इस बार ऑडिट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो 3 घंटे में जो शुरू का पेपर पढ़ते हैं तो ही ज्यादा इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आधा पेपर तो वहीं खत्म हो जाता है. और ये आप मान के चलिए कि 1 से 2 पेपर हर ग्रुप में 1 पेपर तो ऐसा होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा या अबव एवरेज आएगा. सो आप वो मैनेज कैसे करते थे? बिकॉज वो एक स्ट्रेस, बिकॉज मैं तो बोलता हूँ कि आप रैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस होता है कि भाई हमें रैंक लानी है, तो हमारे पर्पस ही होना चाहिए होता है कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में 60-70 मार्क्स तो एटलीस्ट आने चाहिए. और जब आप पेपर देखते हो तो भाई पेपर में आपको मतलब 40 मार्क्स का आ रहा है, 50 मार्क्स का आ रहा है, तो वो जो टेंशन होता है, वो प्रेशर होता है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करना होता है? So say we usually have to attempt 5 questions. So if I guess in even in the toughest paper there will be at least 2 questions that you could comfortably answer, you know something about them. Okay, so if you are attempting them first, you would save your time, and once you have written them, you will gain some confidence that okay, at least 2 out of 5 questions I have written. And if in that, say, first hour your mind is contemplating what about those 3 questions, what would I write in them, what would I do, I would secure 40 marks or 60 marks, whatever you are targeting, then what would happen? You won't able to write those 2 questions, and you will miss out the whole paper. And your entire 3 hours will be consumed in that. You won't be able to recall anything about those 3 questions as well. So what should be your strategies to complete in the first hour, or say 1 hour and 15 minutes time, whatever you know, whatever you feel comfortable with, you complete that, and then devote the rest of the time in recollecting things and connecting dots about the remaining questions, that whatever you can write in those things. Right. Because once you have written what you know, then you have nothing to lose. You can only brainstorm and try to recollect things and just write in the answer sheet. Because
you are not at home, or I would say you are not attempting any mock कि ठीक है मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्या था, थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ. You just have to fight with your brain. राइट राइट तो राइट. गाइस ये साक्षी जो कि एआई2 है वो कह रही हैं कि अगर पेपर कभी भी टफ आता है तो हमें जितना आता है ना शुरू में आप वो एकदम टेंशन फ्री होके वो लिख दो. बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का. मान लो आपको 5 में से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, जितना भी आ रहा है उसको आप बेस्ट लिखो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर से आपके कुछ मार्क्स कट जाएं, उसके प्रॉपर वर्किंग नोट सब कुछ, बिकॉज आपको पता है कि ये आपका एकदम स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसमें से तो कुछ लूज होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो पहले स्ट्रेटेजी वो रखो, फिर उसके बाद आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओगे और ऑटोमेटिकली यू विल सी जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, अगर आप 1-1.5 घंटे बाद यू विल सी दैट आपका अराउंड 30 या 40 मार्क्स का पेपर आपने कर लिया है. इनफैक्ट 25-30 का भी कर लिया है, तो आपको माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द थिंग्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस. साक्षी, एक क्वेश्चन मेरा ये था, कभी एग्जाम में ऐसा हुआ है, मतलब जब से आपने मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल एग्जाम में से पैनिक हो गए, कभी आपसे हुआ है कि पेपर आ रहे तो सब ब्लैंक आउट हो गए, पैनिक हो गए, कभी ऐसा होता है कि यू आर स्टेबल इनफ कि चलो ठीक है यार, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या हुआ? Actually, it happened with me in intermediate direct taxation paper. ओके. So I was approximately blanked out for half an hour after reading that paper. I don't know why that happened, but I was blanked out for half an hour. I was sweating. I couldn't figure out any single question in that paper. And even it included GST, and that was pretty Right. simple. I figured out later on. But I just got blanked out. I don't know what happened at that moment, but I got blanked out in that first half an hour. Then what I did was I just tried to recollect my memory. I just skipped the direct taxation part and went straight to the GST portion, because that time the GST portion was easier. I could cope with it. So after half an hour, I did some GST questions and I was cooling down that okay, I have written something. And then you regained your confidence in that way, in that manner. yeah, after doing some GST questions, I was feeling comfortable that okay, I have written something, because in that initial 30 minutes, I wasn't able to recollect a single word related to that subject. The same anything happened like this in final, और आपने वो लेसन सीख लिया उधर कि नहीं अब नहीं होना चाहिए कभी फाइनल के अंदर? नहीं, that intermediate examination was super exciting for me, because that happened in direct taxation and then it happened in financial management for me. Because yeah, in my attempt, I guess there were say 2 questions, they were completely out of the box. Right. And I had the option to leave only one out of them. I had to attempt at least one of them. Correct. So both these experience taught me to just write whatever you know, and we'll see later on. Absolutely. And guys, just to remind you, इनके साथ ये इंटर में, और इंटर में इनके रैंक 1 थे. मतलब तुम ये बात मत मानो कि वो अरे रैंक करने भी तो पैनिक, उनको रैंक 1 आया था, उन्होंने कोप अप भी किया. मतलब वो भी है इंसान ही ना, अल्टीमेटली होता सबके साथ है, बट इट्स हाउ यू कम बैक. आप उससे निकल के बाहर कैसे आते हो, इट्स अबाउट दैट. सो अक्षांश सर, आपके कुछ क्वेश्चन अभी इसके बाद? अल्टीमेटली सर थिंग ये होती है कि हर किसी के लिए वो पेपर टफ होता है. ठीक है, तो मैं तो सोचता हूँ कि बच्चे नर्वस क्यों हो जाते हैं, बिकॉज अभी इनफैक्ट ऑडिट का पेपर भी टफ आया था ना, तो स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर हमारे एक्सपेक्टेड 35 है 30 है. आई वाज टेलिंग देम कि बात आईसीआई वो पेपर सबके लिए टफ है ना, तो चेकिंग थोड़ी लीनिएंट हो जाती है. बराबर. ठीक है, तो उस चीज से भाई हमें इंस्टीट्यूट टेस्ट किस बेसिस पे कर रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर भी देगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पेपर भी देगा, वो हर लेवल पे हमें टेस्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट. वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ही है कि भाई एक पेपर तो टफ आएगा, तो उसमें ऐसे होपलेस क्या होना, मतलब वो तो श्योर है कि पेपर टफ आना है, कोई सा भी पेपर टफ आ जाएगा किसी भी दिन. तो बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो ये चीज तो सर नर्वस होने के बाद जो आता है वो भी भूल जाते हैं, तो फिर वो अटेम्प्ट लग जाता है. राइट. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. साक्षी, आपका उसके बाद एससीएमपी के अंदर स्ट्रेटजी मतलब कैसा था इसके अंदर, एससीएमपी इन इलेक्टिव्स के अंदर? CMP, I guess for me, I studied SCMP back in 2018 when I just cleared my. So that time the SCMP was more, I would say, numerical oriented, and then it got transformed into the case study based questions. Correct. So it was a transformation for me. What happened good was I was strong in the numerical portion because I studied that only, because that was the pattern back then. So when I started preparing for the case study thing, what I did is, as I told you, I am working as an industrial trainee at HUL.
So I have some experience with the real life application of those things that we study in SCMP, Six Sigma, we study, and Oh. DMI, techniques we see. So I've seen how they are applied in the real life scenarios, how we arrive at the conclusion that okay, Six Sigma would work in this situation. Right. So that helps. And when you are doing in any case study analysis, you should just imagine that this is your business, Right. or this is the problem that your business is facing, your money is at stake, your reputation is at stake, and what would you do with What the would you do? knowledge Right. that you have gained in the SCMP books and whatever your teacher taught you, whatever you have seen in your life. Right. Once you do that, you get that ideas that okay, not you wouldn't get for at first instance that the particular topics that okay, JIT karte hain, Six Sigma karte hain, you won't get those topics, but you get the basic ideas that this needs to be improved in this thing. So basically, you were using the practical aspect of your life to clear this SCMP paper. Yes, and before actual, I was with Anand Sapijay company, and that firm we were basically engaged in business consultancy. Okay, okay, okay. So I have seen many scenarios facing similar, I mean not similar, but facing business problems. Right. And I had hands-on experience on how to actually face a problem. Correct, correct. Which elective did you choose, Sakshi? Arismat. How did it go? How was it? How did you prepare for it? I would say it was the toughest paper for me Okay, in this exams. okay. But the preparation was I would just go through first the institute material that has been given and the past year questions, and I try to make a comprehensive index referencing the past questions, any reference, the institute material reference, and some notes I scribbled down from some stock market failures, the business failures that are usually asked in risk management. Okay, So I okay. could even if refer them or write something from what happened wrong in that particular scenario. So I referenced those topics, and it was helpful during the exams because I could just browse through that. Okay, I have to study, say, a Barings bank case. Right. So I could just refer to it and write, pick out some points that okay, this went wrong in that particular case, and maybe this is somehow matching with the case study at this point of time, and I could write. Right. So RM, I would say you should actually try to see where the risk management failures have actually happened in real life. You would actually get an understanding of the subject because if you go to study RM purely theoretically, it would be tough. Right. Got it. साक्षी, वन एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके मन में आता है, कितने बार रिवीजन किए थे आपने सारे सब्जेक्ट के? हाउ मेनी रिवीजन डिड यू अचीव? या आपने कितना प्लान किया था, कितना रिवीजन किया? ये के पहला। और सेकंड एक कि आपने क्या कुछ टेस्ट वगैरह दिए थे क्या? क्या आईसीआई के मॉक टेस्ट या कोई आपने टेस्ट अपने एंड से दिए थे क्या? Look, the number of revision depends on the confidence level that you achieve in a particular subject. For say audit, I wasn't comfortable even after I did 4 revisions. Okay. I was still doubtful about audit, and on the other hand, there was SFM. I was comfortable with it after 2 revisions as well. Okay, I will be able to manage it. Right. So the number of revisions isn't a constant thing. You have to do 4 revisions, 5 revisions. It depends on your comfortable with that particular subject. Right. Once you are able to say recollect that subject in say the 1.5 day you have before the exams, you are at a comfortable position that you will be able to handle that subject in the exam time as well. Correct. साक्षी, बहुत सही आंसर दिया आपने, क्योंकि सबके मन में डाउट होता है कि एक सब्जेक्ट के कितने रिवीजन होने चाहिए। बट रिवीजन मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप उस सब्जेक्ट में इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो 7 से 8 बार भी करते हो। जैसे सर मैं बता दूं, मैं आकाश सर, मेरा डीटी थोड़ा सा ऐसा हिला हुआ सा था, ठीक है। डीटी का सर मैंने 7 से 8 बार पढ़ा, तब जाके मैं कॉन्फिडेंट हुआ। बिकॉज आप किसी भी चीज में सर, कोई भी चीज आपको टफ भी लगती है ना सर, तो आप उसको इस लेवल तक ले जाओ, मतलब इतना पढ़ के इस लेवल तक ले जाओ कि आपको एकदम कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, फिर आपको उसमें मजा आने लग जाएगा। जैसे कई बच्चों को मैथ से फोबिया होता था, तो आपको ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ऑडिट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैं तो बोलता हूँ आप मल्टीपल रिविजन्स करो। जैसे सपोज करो आज कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो उसको कल वापस से रिवाइज करो। जैसे नहीं आज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसको आप भूल गए, तो आप उसको 1 मंथ के बाद आप उसको देखोगे तो यू विल बी ब्लैंक, ठीक है। उसको कांस्टेंट रिवीजन करते रहोगे ना आप, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कितनी बार काउंटिंग हो गई। शायद साक्षी भी जस्ट एक
आइडिया आइडिया से ही बोल रही होंगी कि 4 रिविजन हो गए मेरे या 5 हो गए, बट उनको भी नहीं पता होगा उन्होंने ऑडिट कितनी बार पढ़ी होगी। तो कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो बस हमारे इजीली हम कर पाते हैं, जैसे एसएफएम हो गया, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कई बच्चों की पकड़ अच्छी होती है। तो द थिंग इज दैट कि आप खुद को एनालाइज करो पहले कि आपको किस सब्जेक्ट में वीकनेस आती है। जैसे कई बच्चों को प्रैक्टिकल में आती है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, करेक्ट। दे आर नॉट एबल टू सॉल्व कॉस्टिंग क्वेश्चंस। तो बार बार उनको लिख के देखो, सॉल्व करो एग्जाम से पहले। सर मैं साक्षी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते थे तो आप बुक्स में हाईलाइट कर लेते होंगे कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले ये वाला क्वेश्चन हमें देख के जाना है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाईलाइट वगैरह कुछ करते ही नहीं है एग्जाम से एक दिन पहले। अब सारे क्वेश्चन तो रिवाइज हो नहीं पाएंगे। जो भी सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको मार्क कर लो। तो आई थिंक आपने भी इसी तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी, मतलब 1 डे बिफोर रिवीजन जो होता है उसकी क्या स्ट्रेटेजी? And that is actually, I call it as my elimination game. And basically how I practice it is I have some symbols for me. At the time of first revision I would use tick marks of say red color. At the time of second revision I would use tick marks of green color. And then at the final time when I'm comfortable with that particular subject I'll use circles. Okay. So at each stage I would be eliminating some topics that okay, I won't read this again, or I would read only that much portion of this, only this much portion of this. And at that time when I reached the circle wala state I would have only enough material that I could recollect on those 1.5 days before the exams. Right. सो बेसिकली वी नीड टू प्लान इन एडवांस कि हम क्या करने वाले, कितना पढ़ने वाले, आगे जाके कैसे करने वाले। ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ते गए, दूसरे बार पढ़ते गए, तीसरे बार भी सभी पढ़ रहे, चौथे बार भी सभी पढ़ रहे, वो नहीं कर सकते साक्षी, राइट? वी नीड टू सेव सम Yes, टाइम, you आई गेस। either you need to eliminate some things or you need to just keep summarizing them so they are just so much crisp that you will be able to if there are some people who believe extremely comfortable in few topics and they think ki even if nahi bhi padha to I'll be able to do it. So they can do the elimination strategy with that. And if some people say for audit I practice that I have to read the entire thing, I can't miss out anything. So I would just correct. So I would just crisp down the audit smaller and smaller with each revision, so it is bearable, manageable in those 1.5 days. Correct. तो सर ये स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को और रैंकर को डिफरेंशिएट करती है। एब्सोल्युटली अक्षांश सर, मैं यही कहने वाला था कि यही फर्क होता है एक नॉर्मल बच्चे में और एक रैंकर वाले पढ़ाई में। ऐसा नहीं है, वो भी तो पढ़ते हैं, बाकी लोग भी पढ़ते हैं, बट इट इज दीस स्मॉल थिंग्स जो डिफरेंशिएट करते हैं सर, है ना अक्षांश सर? एग्जैक्टली सर। अब यही चीज सर अगर मान लो 1 साल 2 साल तक चलती आ रही है कि आप चीजों को समराइज करते जा रहे हैं और फिर एक पोजीशन ऐसी आ जाती है, बिकॉज यू वोंट बिलीव सर 70 से 80% स्टूडेंट्स का, मैं सर शायद ये फिगर भी कम बोल रहा हूँ, उनका एग्जाम से एक दिन पहले कंप्लीट रिवीजन होता ही नहीं है। गाइस आप इस बात से 100% रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिकॉज होता है ऐसा सबके साथ। स्पेशली अब सर बाकी सब्जेक्ट्स का तो जो मैं इतना कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप डीटी और आईडीटी की बात करेंगे ना सर, जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, उनको बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले कोर्स ही नहीं होता है एंड दे आर जस्ट जगलिंग विद बीजीपीपी एंड कैपिटल गेन ओनली, एंड उनका एक दिन खत्म हो गया, मतलब I don't know what they are doing, बराबर बात है सर, करेक्ट। ये चीजें होती हैं। एंड सर मतलब मेरे को लगता है कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रॉफिट, जो हमें पहले से ही पता है कि ये हमारा टाइम लेने वाले हैं, एग्जाम से एक दिन पहले आप इन टॉपिक्स को 1 आवर से ज्यादा डिवोट कर ही नहीं सकते। बराबर है, करेक्ट है सर। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं। पढ़ते तो सभी 10-12 आवर्स हैं, बट दीस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। एंड पीजीपी से सर याद है मुझे साक्षी, डीटी एंड आईडीटी का फाइनली अगर स्ट्रेटजी आप शेयर कर सको, ये लास्ट 2 सब्जेक्ट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? So I am particularly say much more excited to read DT because I love the stories behind every provision that we have, why that provision was introduced, what was the story behind it. I love those. So those stories basically help me understand the section provision, why that particular thing was brought into force. Correct. What loophole existed in the system that particular provision closed it. So that backstory helped me a lot to remember section numbers as well and remember the exact provisions because I knew the loophole that was there in the system. Correct. So what I would have done to close that loophole. So that is the provision that was introduced. Right. And what about the question practice in DT? Question practice, I would say you should do as many questions as possible in DT because I guess DT is so huge. Even if I'll go read it now, then I'll find something new. करेक्ट। मैं इस बात पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज
सर साक्षी, यू जस्ट लेट मी नो वन थिंग। बच्चे डीटी और आईडीटी के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, आप वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के चले जाते हैं। दे आर जस्ट कंप्लीटली फोकस्ड टुवर्ड्स प्रोविजन ओनली। लेकिन मैं एक चीज एकदम क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ेंगे ना, आप प्रोविजंस पढ़ के क्वेश्चंस कर लीजिएगा ना, तो एकदम अलग ही कुछ होता है। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज क्वाइट वेरी डिफरेंट। जैसे अगर आप जीएसटी की बात करें, तो अगर आप आईसीआई के एमटीपी आरटीपी उठा के देखेंगे, तो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आईसीआई ने बना रखे हैं। बट हम प्रोविजंस पढ़ेंगे तो दे आर जस्ट सिंपल। तो बच्चे क्या करते हैं कि प्रोविजंस को रिपीटेटिव बेसिस पे पढ़ के जाते हैं, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप अपनी क्लास में एक एक क्वेश्चन क्लास में क्यों करवाते हो? तो इसलिए करवाता हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी ना, तब तक आप क्लियर कर ही नहीं सकते डीटी और आईडीटी का। तो मैं तो ये फंडा मानता हूँ। साक्षी, इस बात से आप एग्री करते हैं नहीं करते? I completely agree. I would narrate an incident. When I said the DT IDT paper in the intermediate portion, so that time DT was completely new to us. I mean, was never aware of DT before studying intermediate. So what happened at that time, the normal strategy that we follow from school onwards and all this, you should know the answers. Whatever the provision is written, you should know it. And whatever the question will somewhere around it, and you will be able to solve it. But what happens is, DT mein there is always a new, say, a twist in that question, a new thing in that question, and until and unless you have solved that question, you have applied it provision, you will not get the intricacies involved in that particular provision. You will miss the small details. You will sometimes forget the number of days in the interest calculation. You will do the 1 day, 2 day mistakes, the rate mistakes. Correct. So these sort of mistakes are avoided once you practice enough questions. And many of us face the problem of not remembering the section numbers. So that also helps when you have done the questions, because when you do the questions now, your focus although is on the calculation part at whatever provision is, but your mind is capturing the section numbers as well. It is trying to recollect it, where it was written. So that helps you to recollect the section numbers as well. Right. And what about IDT? मतलब IDT में आपने कैसे इसको prepare किया था? IDT is the same strategy as Same DT. strategy like DT. Yeah. Perfect. So this was your 8 subject strategy and this is how you were able to achieve rank. मेरा एक last question है मेरे end से, फिर अक्षांश सर को अगर पूछना होगा तो पूछेंगे. What is your advice to the students who are struggling to clear CA, not in the first attempt but after not being able to clear in the forthcoming attempts? मतलब एक दो attempt लग गए, now they are feeling low, अब वो हार मान चुके हैं. So what is your advice या what is your tips to them? मतलब 2-3 लाइन में अगर आपको उनको हेल्प करना हो कि ये आप करो तो आप बन सकते हो, तो what is your advice for them? I would say first, I might be wrong, but first they need to ask themselves the question, do they really want to do it? Because if they really want to do it, then they will do it at any cost, and they'll do hell lot of a planning to achieve it. Right. So once they ask themselves honestly whether they actually want to pursue it, then they can plan it very detailed at whatever they think there are strengths, weaknesses, and whatever they think should be considered in that planning. And once they do that, I would advise them to devote, say, 6 months, 5 months completely to the subject, the course, and just clear out all the distractions and whatever is keeping you. I would say even stay away from some friends who might have cleared or who might also be struggling in that period as well, because friendship is good, but the negative energy that comes with those discussions is not good. Great Sakshi, great. So just give yourself a 5-6 months time and just devote yourself, and if you really want to do it, you will be able to do it, I guess. Correct. एक्चुअली बहुत सही बात बोली आपने. एंड इवन आकाश सर, मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूँ. किसी भी इंसान में, इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक्स ओनली, हम में किसी भी इंसान में किसी भी चीज की जितनी हंगर होगी ना सर, वो उसको तोड़ के ही रहेगा. आप उसको कितना भी रोक लो. सपोज करो कि समबडी इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज बिजनेस, ठीक है, उसको किसी को सर पैसों की बहुत हंगर होती है, ठीक है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली लॉस्ट टुवर्ड्स अर्निंग मनी. किसी को होता है कि भाई हमको ये मार्क्स अचीव करने हैं. आपको ना दिन का पता होता है सर उस टाइम, ना रात का पता होता है. यू आर जस्ट कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ वन गोल. वो कहते हैं ना सर कि सन्यासी किसको बोलते हैं? सन्यासी सर उसको नहीं बोलते कि जो पहाड़ पे जाके रहे और भगवा धारण कर ले और है ना दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सर सन्यासी वो होता है जो सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे, सब कुछ छोड़ दे.
ठीक है, एंड जस्ट फोकस टुवर्ड्स अ वन गोल, वो रियल में सन्यासी होता है। मैं तो मान के चलता हूँ सर कि विदाउट, अगर आप लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना सर, तो हम लाइफ में कुछ पा भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सब लोग सैक्रिफाइस करते हैं। मेरे ख्याल से साक्षी आपने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, आपके पेरेंट्स ने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे जिसका आज ये रिजल्ट आया है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू साक्षी। अक्षांश सर, आपको कुछ साक्षी से लास्ट में कुछ पूछना है इनसे? हाँ साक्षी, मेरे को आपसे एक दो क्वेश्चंस और पूछने हैं जो कि बहुत बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुआ था, तो आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की? मतलब जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद अभी क्लियर करेंगे या इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके, तो मैक्सिमम बच्चों को ऐसा है, मैं तो बता रहा हूँ कि फेल होने के बहुत सिंपल सिंपल से रीजन हैं जो सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी वो गलतियां होती हैं, फिर भी हम फेल होते हैं। तो जैसे बच्चे क्या करते हैं कि एक दो साल तो एकदम चिल होते हैं, फिर आर्टिकलशिप में लग जाते हैं और उनकी क्लासेस तक कंप्लीट नहीं होती। तो आप मुझे दो क्वेश्चन, दो बातें बताइए। पहली बात तो आपने पढ़ाई कब से शुरू कर दी थी इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, और आपने क्लासेस कब से शुरू कर दी थी इंटरमीडिएट करने के बाद, और क्लासेस कब तक खत्म हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले? So I started my classes in somewhere around December 18. My result was out in July 18 and I started the classes in December 18. So I would advise to take, many of us fear that अभी क्यों classes ले, बाद में amendments आ जाएंगे फिर से करना पड़ेगा. It is the major concern that we have. So you could do classes of the subjects that doesn't undergo so many amendments. You could do SFM, you could do SCMP. These are the subjects that would go under extreme volatility, that the entire subject would be turned around, the provision would be reversed, or something dramatic would happen in them. You could start with these subjects and gradually progress. And once you are comfortable with these subjects, now you will get confidence. And as the time comes nearer, the exam times, the months as they go by, you will feel some pressure that okay, अभी मेरे दो ही subject हुए हैं, अभी और भी करना है, अभी और भी करना है. करेक्ट। What happens is we usually start with the planning कि okay 3 month या 4 month का लीव मिलेगा जो भी फॉर्म से, उसमें ही कुछ तो क्लासेस एक दो बचा लेंगे, वो खत्म कर लेंगे, then we'll study. That doesn't happen in that leave period, because जैसे ही वो लीव मिलता है आपका एक वीक एटलीस्ट सेटल डाउन होने में लगता है. यू नीड टू प्लान कि अब आगे 3 महीना 4 महीना कैसे पढ़ना है आपको. करेक्ट। That takes time. So you should try to complete all of your classes before you go on leave. करेक्ट, एब्सोल्युटली। And by classes I don't mean you were just sitting and watching those classes. करेक्ट, you have to keep on reading also side by side. Keep on reading. What I used to do is I would say, if I'm doing 2 subjects at a time, then with the classes with offices and all will usually take 3 months approximately to get completed. And then I would devote say 10-15 days depending on the subject, the coverage that I need to do, to go through the entire thing that I have studied over the course of 3 months. Correct. To just revise or make some sticky notes I would paste there कि okay ये point मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे recall करना है. So that way you get a complete revision of that particular subject, and you don't need to refer say a particular lecture or some video clip कि अब वो तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या बोला था उन्होंने. हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट. तो मतलब बात ऐसी है कि क्लासेस नाम के लिए, मतलब नाम के लिए तो लिए जाते हैं, सभी लेते हैं, ठीक है, बट आप उससे एकदम रेगुलर रहो. और ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि अमेंडमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो बोलते हैं अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, तो आप कोई सा भी अमेंडमेंट आ जाए आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. कोई अमेंडमेंट, कोई ऐसे कुछ अमेंडमेंट नहीं आता कि सब्जेक्ट चेंज हो गया आपका, ठीक है. तो ये अमेंडमेंट्स के नाम से जो बच्चे क्लासेस लेट करते जाते हैं, फिर एक अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, या फिर वो बहुत गलत चीज है, ठीक है. तो ये सब नहीं करना है कि क्लासेस एक बार शुरू में ले लो और क्लासेस को कोशिश करो कि एग्जाम से 6 मंथ्स पहले तक क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए एटलीस्ट, जिससे बिकॉज रिवीजन का सफिशिएंट टाइम मिल सके. और आर्टिकलशिप के आप कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहें, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊं सब्जेक्ट को. राइट राइट राइट, परफेक्ट है. अक्षांश सर, आपके एंड से और कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं साक्षी मैम को? नहीं, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड हमारे स्टूडेंट्स ने भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे थे. एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप नोट्स बना के पढ़ते थे क्या? Yes. I prefer writing notes in my own handwriting, because that helps you recollect quickly, because you understand what you have written. And I personally feel this must have been the experience with many students. When you write something now, sometimes you remember the page side you have written something on. And whenever you are recollecting a particular thing, a image just forms in your mind that okay, with on that side of the page I have written that thing in that color. So that helps you to recollect things.
Correct, correct, correct. Got it, got it. So thank you so very much, Sakshi. It has been a pleasure and many, many, many congratulations again to you and your whole family. I hope you the best of luck in your life. Thank you so much and ज़रूर कभी in case future में कहीं मुलाकात हुई तो ज़रूर से मिलेंगे, है ना? So thank Thank you you. so much and to all the students I would just like to add कि मुझे सिर्फ एक बात बतानी है कि जो भी क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए हमारा एक बैच भी आ रहा है, फास्ट ट्रैक बैच फॉर ग्रुप वन फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस ग्रुप वन. व्हेन यू बाय दैट बैच यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप वन. फास्ट ट्रैक कोर्स है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर दिसंबर 21, जहाँ फास्ट ट्रैक कोर्स में भी एनरोल करोगे तो आपको फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, राइट? दैट यू कैन एनरोल. द कूपन कोड यू कैन यूज इज एफ आर विथ ए, जहां आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा प्लस 3 मंथ्स के ऊपर 1 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स के ऊपर 2 मंथ एक्स्ट्रा. मतलब मैंने अनअकैडमी के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ भी है, यू कैन रिफर दैट. तो ग्रुप वन की सारी डिटेल्स मैंने वहां दी है. इन केस इफ यू फील आपको क्लासेस लेने की जरूरत है, you can go for the fast track batch and don't forget to use code FR with AK to get 10% off for group 1. group 2 की डिटेल्स अभी जस्ट अक्षांश सर आपको एक शेयर कर देंगे जरा सा. सी ग्रुप 2 में ऐसा सीन है, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कि ग्रुप 2 में जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैंने एक बैच बनाया, बिकॉज ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनकी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट है कि मतलब या तो बने या नहीं बने, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जो ओल्ड कोर्स से न्यू में जाएंगे, तो इट्स अबाउट बहुत कईयों की बहुत ज्यादा एजेस भी बहुत बड़े भी हो गए हैं और उनके लिए बस लास्ट ही चांस है जो भी है. तो स्पेशली ग्रुप 2 ओल्ड कोर्स स्टूडेंट जिनका रह गया उनके लिए बैच बनाया मैंने. और जो न्यू कोर्स स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं उनका भी फास्टर बैच है. जो फ्रेशर्स हैं मई 22 वाले उनके लिए भी बैच है, नवंबर 22 वाले बैच है. तो मेरे ऑलरेडी 4 बैचेस चल रहे हैं. आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी चीज का, आपको चारों बैचेस का एक्सेस मिलेगा ग्रुप 2 के अंदर. डीटी आईडीटी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, डी हमारे कॉस्टिंग सचिन गुप्ता सर हैं, इलेक्टिव लॉ अमित पोपली सर हैं, तो बहुत सारे फैकल्टीज मिल जाएंगे आपको. करेक्ट. ठीक है, तो आप अनअकैडमी पे जो भी लें, मतलब अनअकैडमी ग्रुप 2 का जो सब्सक्रिप्शन लें आप, तो आप कोड एक बार ध्यान से लगा दीजिएगा, AKG10 कोड है, AKG10. ठीक है, या फिर आप AKG SIR सर, AKG सर कोड लगा सकते हैं, बिकॉज उससे हम ट्रैक कर पाते हैं किस स्टूडेंट ने कौन सी क्लास ली है और उसको वही रेस्पेक्टिव बेनिफिट दे पाते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच साक्षी फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज आज आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारी फैमिली प्लानिंग्स होंगी, बहुत सारी पार्टीज होंगी, एंड स्टिल you have spent your 40-45 minutes with us. So it's so much thank you. एंड आकाश सर, एंड कुछ लास्ट में आप कुछ सर मैसेज देना चाहें हमारे लर्नर्स बस को? मैं थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ आपका टाइम कितना प्रेशियस है, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला 40-45-50 मिनट्स. सो थैंक यू सो मच साक्षी एंड प्लीज़ इन्जॉय दिस मोमेंट. ये मोमेंट आप जानते हो, जब इंटर में आया था अभी वापस आया है, ये वापस नहीं आते मोमेंट्स. मतलब अपन लाइफ में कितना भी अचीव कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, बट ये मोमेंट कभी लाइफ में नहीं आएगा. सो इन्जॉय दिस मोमेंट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. थैंक यू सो मच साक्षी. Thank you. Thank you so much. Thank you so much Akshan sir. Thank you so much for joining. Thank you so much every student, to each and every student जो इतने टाइम तक स्ट्रीम पे बने थे. Thank you so much everyone. चलो bye bye. Take care. See you.